or that will be x2 of k. Okay, then so this is a DFT and IDFT method for the circular convolution. Okay, this I think I already told you in last lecture. Okay, so now we will go for the graphical method and matrix method. So we will take one numerical. We are not having numerical in this video. Let me check. If you we are having, so we can so, linear is there. Correlation. No, it's not. Okay, so we will take 2 3 numericals based on this. 3 numericals based on each graphical method. Then matrix method. Matrix method is also very simple method to solve the circular convolution. Okay. Uh, Write down one question using graphical method. Using graphical method, using graphical method, using graphical method, obtain a 4-point circular convolution, a 4-point circular convolution of two dt signal, of two dt signal, of two dt signal. X of n is equals to x of 1 is equals to, in curly bracket, 1 2 3 1, sorry, 1 comma 2 comma 3 comma 1. X of n is equals to, in curly bracket, 1 comma 2 comma 3 comma 1, and h of n is equals to, h of n is equals to 4 comma 4 comma 3 comma 2 comma 2, 4 comma 3 comma 2 comma 2, 4 comma 3 comma 2 comma 2. Okay, okay, so graphical method, you can solve this by using graphical method, and for the graphical method, yeah, you can use the formula. That is, if you remember from the last lecture. Anyone has written the question? Just WhatsApp me. Please WhatsApp me the question. Okay. Oh, I can rotate it.
Okay, so this is a question. If you are not written, okay, so using graphical method obtain 4-point circular convolution of dt signal. Okay, so here you can use this formula, that is y of n is equals to y of n is equals to summation. You can write this as a y of m also. Instead of n, you can write this as a y of m, because we are using x of n. So here you can write this as a x of n into h of m minus n, h of m minus n. Okay, so this can be the formula, and here n is varying from 0 to capital n minus 1. Okay, for a linear convolution we are taking phase minus infinity to infinity, means we are as per the question we are verifying that signal, मीन्स कहाँ से कहाँ वो सिग्नल एग्जिस्ट करेगा. ओके, सो अगर वो -2 -4 से एग्जिस्ट कर रहा है, सो वी कैन राइट फ्रॉम -4 to +4 समथिंग लाइक दैट, लिमिट टू दैट. ओके, सो कहाँ से कहाँ तक वो सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन दैट. ओके, or one formula is there that means you can take the lower range of this and this, you can add both the lower range, and you can take higher range of this and higher range of this, and you can add, so you will get the higher range, lower and higher range of this y of m. Okay, something like that. That formula is there for linear convolution, if you remember. Okay, one graphical method or analytical method or tabular method, anyone. Okay, so x of n into h m minus n. Okay, so here uh, this is varying from 0 to capital N minus 1. Okay, so see here, and this will be the of the same sequence. Okay, whatever that points you will get, that will be the in a circular convolution. If you take the result of that circular convolution, that will be the same of the same length. Okay, x of n, h of n जितनी लेंथ का है, you will get the same length sequence. Okay, what happen if any element is missing over here? Okay, so for example this is of 3 element only, so here you need to do the zero padding for the circular convolution. Size must be same for the circular convolution. Okay, दोनों का भी साइज सेम चाहिए, x of n and h of n. अगर नहीं है तो क्या करना है, जीरो ऐड करना है, जीरो पैडिंग करना है. ओके, सो initially what you need to do, you need to draw a circle like this for a graphical method. Okay, and then this is your first element. Okay, for x of 0, if you are taking x of n, for so x of n, so this is x of 0, first element. This is a starting point. Okay, ये starting point रहेगा. Sorry. Okay, so what you need to do, you need to plot a graph like this. You need to plot a circle. Okay, here this is a starting point. You x of 0, you x of n, you need to write over here. Okay, so x of n, so this will be 1, then this will be 2, then this will be 3, and then this will be 1, like this. Okay, so this is what, this is your x of n. Okay, in the same manner you need to take another circle. Okay, you need to draw the another circle also, something like this, and in that you need to write the h of n. Okay,
So h of n in your formula, if you take for the m equals to 0, okay, for m equals to 0, for m equals to 0, for y of 0, okay, so for y of 0, this will be x of n into h of m is 0, so this will be h of minus n. So this is your h of n. If you are taking minus n means folded sequence is there. So this is your starting element, so that will be as it is 4. Then folded sequence is there, so you have to start clockwise. So 4 3, then 2, and then next one 2, like this. Okay, so now you need to do the element wise multiplication to get the y of 0, value of y of 0. So 4, same position element, that is a 4 into 4, so this will be 4, then plus this one 2 into 2, so that will be again 4, okay, then plus 3 into 2, so that will be 6, same position, this one and this one, then this is also 3 into 1, so this will be 3. Okay, so the first value by the circular convolution or value of y of 0 will be 8 plus 6 17, correct? So the first value will be something 17, 1 7. Okay, so that will be the first value. Okay, then y of 1, for the next value you can take y of 1, y of 1. Okay, so the first value is y of 1. For the second value, when value of m is 1, so in that case m, so this sequence is starting from here. Now you need to shift that sequence to the means advance this is a delay in a sample. Actually this is a folded sequence h of m. This is what h of minus n, okay, and plus 1 you are doing in that, so that is a delay in a sample. So delay means you need to shift the sequence clockwise by one position because 1 is there. This is a 1. Okay, so in short what you need to do for the further, you need to shift this h of n. This is what h of minus n, actually this is not h of n. h of n रहेगा तो सेम आपको जैसे x of n लिखा है वैसे लिखना है. h of minus n है, that's why we have written in clockwise. So first element as it is, then clockwise. Okay, then h of minus n plus 1. Okay, actually you are getting value of m you are writing, so m का वैल्यू क्या है 1 है. ओके, सो 1 माइनस n है वो, करेक्ट है, बट यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. सो इट इज़ अ फोल्डेड सीक्वेंस, देन 1 जो है प्लस 1 है, सो प्लस 1, n जो है माइनस है, सो इट इज़ रिटन लाइक दिस. सो नेक्स्ट इन अ नेक्स्ट डायग्राम यू कैन कीप x ऑफ n एज इट इज. x ऑफ n वैसे ही रहेगा, बट h ऑफ n क्या होगा, बाय वन पोजिशन इट विल बी शिफ्टेड. ओके, यू नीड टू ड्रॉ द प्रॉपर सर्कल. ओके, so total 4 positions are there. So previously starting point was here, so it will be shifted by here. Okay, so here 4 will be there, then next sample will be shifted over here 2, then next one will be here 2, and then next one will be here 3. Okay, then for y of n, same position element you need to multiply with the x of n. So 3 into 1, so this will be 3. Is there any doubt in this? Then 4 into 2, same position element, that is 8. With x of n you need to multiply, because in a formula it is a x of n into h of m minus n. Okay, m का value 1 लिया है. Okay, then guys, are you following me? Is there any doubt? 6. No, sir. No, sir. All of you getting this? Okay, it is very simple actually. 2 into 1, so this will be 2. Okay. Okay, so now you can see here, so 3 into 8, 11 plus 6, 17, 19, correct?
in a same manner you can do for the another one. And for every time, for every h of n, you need to draw this h of n circle. Okay, and x of n along with you, you can keep as it is. Okay, then y of 2, for y of 2, now again by one Hello. position, actually. Also, do we have to show x of n on each and every step, or is it okay if we draw it once because it's constant? Yeah, no, Not actually very. for the calculation stepwise, you need to do the calculation. So for every step you need to show that x of n. Okay, Okay, sir. yeah, now you are doing the folding, so this is h of minus n. So 2 by this sequence, this h of minus n by 2 sequence you need to shift. Otherwise this is h of minus n plus 1. So this plus 2 means this, if you are doing the shifting in this is what, this is h of minus n plus 1. So plus 2 is there, so by one sample you need to shift this one. ओके, अगर इसमें शिफ्टिंग कर रहे हैं तो एक ही सैंपल से करना पड़ेगा, क्योंकि एक सैंपल से आपने ऑलरेडी शिफ्ट किया है. ओके, अगर एच ऑफ माइनस एन में कर रहे हैं तो आपको 2 सैंपल से इसे शिफ्ट करना पड़ेगा. ओके, so by one position again you can shift. So 3, this is the original position, so it will be shifted to this one. Okay, so by one position it is a shifting. Then it will be 3, then it will be 4, correct है, then 2, and then 2. ओके, जो लास्ट सीक्वेंस था, सिग्नल था, वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया. ओके, और 3 जो था स्टार्टिंग पॉइंट, वो यहाँ पे 1 से शिफ्ट हो गया. ओके, अगेन डू द कैलकुलेशन विद दिस एलिमेंट वाइज. ओके, सो पोजिशन वाइज, सो 2 into 2, so this will be 2. देन प्लस, कहाँ तक करना है ये आपको, y of 3 तक, बिकॉज 0 टू कैपिटल n माइनस 1. सो कैपिटल n क्या है यहाँ पे, 4 है, 4 एलिमेंट्स आर देयर. ओके, सो 0 1 2 3 तक आपको निकालना पड़ेगा इसे. ओके, और 3 में चारों पोजीशन भी शिफ्टिंग हो जाएगा. ओके, सो 2 into 2, so this will be 2, then 3 into 2, so this will be 6, then next one 4 into 3, so this will be 12, then plus 2 into 1, so this will be 2, so 10 22 ऐसा 22 नहीं correct. जॉइन हो रहा. Sorry, 2 plus 2, please mute yourself, please mute yourself. अरे दूसरा अकाउंट है. I think some noise is there. नहीं करेगा. Drumil, please. Okay. नहीं करेगा, देख ले. So, actually, I'm muted. Yeah. It's someone else. Jack Abhishek. Please inform him. So you can mute him as well. I need to go back and this will be erased. Okay. So 2 plus 2, 4, 22. It is correct. Please check it. Yeah. Okay. Then the next one, and that will be the last one. That is h y of 3. So value of m is 3. So y of 3. Okay. So for y of 3, again it will be shifted by one position. So your h of n will be now minus h of minus n plus 3. This is a plus 2, so this will be plus 3. Again you need to shift it by one position. This one, last one, this you need to shift by one position. Okay, so it is a starting 2, so 2 will be shifted over here. Then this will be 3, and this will be 4, and then this will be 2. Okay, so do the multiplication with this one. So this will be 2 into 1, so this will be 2, then plus 2 into 2, so this will be 4, then plus 3 into 3, so this will be 9, then plus 4 into 1, so this will be 4. Okay, so 19. So your answer will be 19, 19. Okay, so this is the graphical method. Finally you need to write, that is y of n means circular convolution of this y of m. Okay, y of m is
equals to, in curly bracket you have to write your all the position, that is y of 0 means 17, 19, 22 and 19. Let me check the answer. 17, 19, 22 and 19. Okay, so this is a graphical method how you can obtain the circular convolution by using graphical method. Okay, now I will tell you the matrix method also on the same question. Okay, so how you can solve by using matrix method. Okay, so for matrix method what you need to do, you can take the matrix like this. It will be 4 by 4 matrix. Okay, so in that you can write your first sequence 1 2 3 1 like this. Okay, and it will be 4 by 4 matrix, and then another sequence, that is h of n. Okay, you can write that sequence also, that is a 4 3 2 2. Okay, and this multiplication will give you the final answer. Okay, and what about the remaining element? This is a 4 by 4 matrix, so other elements are also required in this. Okay, so to solve this one, other elements are also required. Okay, so in that okay, so what you can do for here, you can write this element. See here, this last element will be the first element for the next one. Okay, and other this column will be as it is 1 2 3. Okay, same thing for the next column also. Last element will be the first one, and the previous column will be as it is after that. Okay, so this will be 1 2 3. Okay, then the last element again as it is, that is 3, and the previous column will be as it is 1 2. Okay, now you can take this, this is a 4 into 3, so 4 plus 3 7, and this is what, this is a 2. Okay, so 4 plus 7 and plus 6 7 13 and plus 6. So first element is your 19. Correct hai? You can compare with your previous answer. Okay, oh sorry, one correction is there, small correction is there. Yeah, you need to take h of n in this matrix. Okay, remember this is a h of n matrix. This is what, h of n matrix. Okay, and x of n means first sequence you have to take in a column. Okay, so you need to take this in a column, x of n. Whatever x of n is there, means this one, this sequence you need to take over here. So this will be 1 2 3 and 1 like this, and h of n you need to write here. So h of n is 4. Same method is same, 4 3 2 and 2, sorry, like this. So this is a h of n matrix actually. So here h of 0, h of 1, h of 2, h of 3, like that also you can write. So h of 3 means last element will be the first one for the second column, and the previous column will be as it is. So 4 3 2. Again for the next column, last element, that is a 2, will be as it is, and then previous column, that is a 2 4 3. Okay, then the last element will be the first element over here. Okay, 3, then previous column जो है starting 2 2 4. Is there any doubt in writing this? Just remember one thing, h of n you need to write in a 4 by 4 matrix, or the second sequence. For example, x of n and y of n is given, so the second sequence y of n you need to write in this format. Okay, in this matrix. Okay, so
here you will get the final answer by doing the matrix multiplication. Okay, so how to do the matrix multiplication? It is known to you. Take this row on this column. Okay, do the element wise multiplication and add all the results. So 4 into 1, so this will be 4. Then 2 into 2, so this will be 4. So 4 plus 4, this is a 8. Then 2 into 3, so this is a 6. 8 plus 6, so this will be 14. Then into 3, so 14 plus 3, so that will be 17. Okay, now it is correct with your previous answer? Yes, sir. Yeah, thank you. Okay, then second row on this column. Okay, so this will be 3 into 3, so this is a 3. Then 4 into 2, so 8. 3 and 8, so 11. Then 2 into 3, so this will be 6. 11 plus 6, 17. Then 2 into 1, 17 plus 2, so that will be 19. Verify with your previous answer. Okay, so this is a 19. Okay, then third row on this column. Okay, so this is a 2, then 6, then 12, so 18, 19, and then 2, so this is a 21. Correct? Yes, sir. Yeah. Sir, Then 22. 22 रहेगा. सर Okay. 22 होगा ना? Yeah. हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक किया शायद मैंने कुछ. Okay, actually you can write in rough, you can write this calculation, so there will be the minimum chances of error. Okay, then 2, this is also 2, so 4, 6, then 9, 15, and 4, 19. Correct? Yes, sir. Yeah. So this is a matrix method. How you can solve the circular convolution by matrix method. This is a h of n, this is a x of n, and whatever answer you are getting, that you can say y of 17 n. है I think. लास्ट वाला 17 है, नहीं 19 है. No, sir, 19. So y of n. Okay, so this is a y of n. So this is a h of n, this is a x of n, and this is a y of n. So is there any doubt in this both the methods, graphical method और इसमें कोई doubt है? No, sir, it's clear. Okay. Now see what you can do. See, you can remember this result, or you might have written this 17, 19, 22, and 19. Okay. So one more thing, if you do the linear convolution over here, okay, in between these two sequence, if you do the linear convolution, okay, so what happen in linear convolution, here you can write this sequence that is h of n, that is a 4, 3, 2, and 2. Okay, and here you can write the x of n, that is a 1, 2, 3, and 1. Okay, this is a tabular method to find out the linear convolution. Sorry. So this is a 4. You can multiply to all the columns with this 4. Okay, so this will be 4, 8, 4 into 3, so this will be 12. Okay, then 4 into 1, so this will be 4. Okay, then with 3 to all the columns, so this will be 3, then 6, then 9, then 3. Okay, then with 2 to all the columns, so this will be 2, this will be 4, this will be 6, and this will be 2. Okay, then the last row with all the columns, so this will be 2. Again same thing is there, 2, 4, 6, and last one is 2. Okay, so diagonally you have to mark this. So this is a y of 0, this is a y of 1, then this is a y of 2, then this is a y of 3, then y of 4, then y of 5, and last one is y of 6. Okay, so y of 0 over here, the first diagonal, it is a y of 0,
and that is having value 4. So as you compare, this is a linear convolution. Linear convolution and circular convolution, you are not having the same result. Okay. In a linear convolution, what happens? The length of this sequence, इस सीक्वेंस का लेंथ अगर L मानते हो, इस सीक्वेंस का लेंथ अगर M मानते हो, और जो आउटपुट है उसका लेंथ अगर N मानते हो, so N will be L plus M minus 1. Size of this will be, or length of the sequence will be L plus M, means both the sequence length you need to add and minus 1. Okay, so this is what, this is a 4, इसका लेंथ कितना है 4, this is also having length 4, so 4 plus 4 8 minus 1 7. Okay, so y of 0 to y of 6 means 7 elements are there. Okay, so this is a 4, this is a 11, this is a 2 plus 6 and 12, so 18 plus 20, so this is a 20. Okay, and this is a 6 plus 13, so 19, this is 19, then this is a something 13, this is a 8, and this is a 2. Like this you will get the linear convolution. Okay, but if you compare with your circular convolution, so you are not getting the same result. Okay, so how you can get the same result? Okay, so for that to getting the same result, what you need, the number of elements for the circular convolution will be maximum for like h of n or x of n. see in circular convolution whatever result you will get means this should be of the same size. x of n और h of n जो दिए रहेंगे दोनों भी सेम साइज के रहने चाहिए, और सर्कुलर कन्वोल्यूशन भी जो मिलेगा उसका भी लेंथ सेम ही रहेगा. अगर दोनों सेम साइज के नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 1 ऐसा दिया है और यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट नहीं है, सिर्फ 4 and 3 है, तो आपको यहाँ पे जीरो पैडिंग करना पड़ेगा, 2 जीरो ऐड करना पड़ेंगे. ओके, सो आपको आंसर जो है y of n वो आपको 4 उसका जो लेंथ है वो 4 ही मिलेगा, सेम लेंथ मिलेगा. समझ में आया? Yes, sir, clear. Yeah. Okay, so if you are not having same length, you have to make the same length. Okay, same thing is there, in a linear convolution you are getting this result. I am not writing this. If you want I can write y of 0 then y of 1. It will take unnecessary time. Okay, so this just you need to add these diagonal elements, you will get the linear convolution of this. Okay, so y of 0 से लेके लास्ट वाला क्या है y of 6, टोटल कितने एलिमेंट मिल रहे हैं आपको? 7 एलिमेंट मिल रहे हैं. ओके, अगर मुझे लीनियर कन्वोल्यूशन और सर्कुलर कन्वोल्यूशन से भी सेम रिजल्ट चाहिए दोनों में, ओके, तो लीनियर कन्वोल्यूशन का जो रिजल्ट है वो आपको एज इट इज रखना है, बट सर्कुलर कन्वोल्यूशन जो आपने निकाला है, ओके, इसमें ये जो साइज है, लेंथ जो है एलिमेंट की, इसको आपको 7 लेंथ करना पड़ेगा. ओके, क्योंकि लीनियर कन्वोल्यूशन क्या है, ये 7th एलिमेंट है इसमें, तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, 4 तो ऑलरेडी है, 3 जीरो ऐड करना पड़ेगा, 0, 0, 0, like this. 3 0 you need to add in this and in this also 3 zeros. This is zero padding actually, so 3 zeros you need to add, and then you need to use matrix method and solve it. You will get the same result by the circular convolution and linear convolution. Okay, getting or not? Yes, So sir. can you repeat? Okay, you need to add zeros. Okay, because see आपको लीनियर कन्वोल्यूशन में जो रिजल्ट मिल रहा है that is having size, it is varying from y of 0 to y of 6. Why? Because इसका भी 4 साइज है, इसका भी 4 साइज है, L 4 लेंथ है और M का भी लेंथ 4. ओके, सो 4 plus 4 8 minus 1. सो लीनियर कन्वोल्यूशन में जो आपको आउटपुट मिलेगा y of n मिलेगा, उसका लेंथ कितना रहेगा 7. ओके, और सर्कुलर कन्वोल्यूशन में जो लेंथ मिला है उसका लेंथ कितना है 4. ओके, सो अभी मुझे दोनों रिजल्ट सेम चाहिए, लीनियर कन्वोल्यूशन और सर्कुलर कन्वोल्यूशन का भी रिजल्ट सेम आना चाहिए. तो जो सर्कुलर कन्वोल्यूशन के लिए ये जो x of n और h of n दिए हैं, इन
दोनों में भी आपको 0 पैडिंग करना पड़ेगा। और कितना? 7 साइज, क्योंकि लीनियर कन्वोल्यूशन का लेंथ क्या है? 7 है। ओके, सो 7 लेंथ होनी चाहिए x ऑफ n की भी और h ऑफ n की भी। सो वो कैसे होगी? बाय डूइंग द 0 पैडिंग। सो कितने 0 मिसिंग है यहाँ पे? 3 जीरोस आपको ऐड करना पड़ेगा दोनों भी सीक्वेंस पे। ऐड करने के बाद जो x ऑफ n बनेगा और h ऑफ n बनेगा, इसको आपको मैट्रिक्स मेथड में लिखना है। मैट्रिक्स में लिखना है। मैट्रिक्स मेथड में कैसे लिखोगे? h ऑफ n। ओके, सो h ऑफ n, जो भी h ऑफ n है 4 3, ओके सॉरी 4 3 2 2 और लास्ट में 3 टाइम्स 0। ओके, इन नेक्स्ट कॉलम 0 जो लास्ट है वो ऊपर आ जाएगा और देन 4 3 2 2। ओके, एंड रिमेन 4 3 2 2, remaining will be 0 0। okay, so like that you have to write that h of n matrix, and x of n matrix क्या होगा? 1 2 3 1 3 times 0 0, and you have to do that 7 by 7 matrix बनेगा अभी। you need to do that calculation। okay, just you will get the same result like your this linear convolution में जो result मिल रहा है। okay, Yes, sir. Clear now. okay, so this is all about the circular and linear convolution। okay, and all the methods are there। I will give some numerical as a homework, or otherwise if you want we can take 1 or 2 numerical on the same concept। okay, write down one question। find the linear convolution, find the linear convolution of x1 of n and x2 of n। find the linear convolution of x1 of n and x2 of n if x1 of n is equals to, in curly bracket, 1 2 3 4, sorry 1 comma 2 comma 3 comma 4, 1 comma 2 comma 3 comma 4, x1 of n, and x2 of n is 1 comma 1 comma 1, 1 comma 1 comma 1। okay, now linear convolution क्या है? सीक्वेंस अभी आपको दिया है 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4। ओके, एंड h ऑफ n क्या है? 3 टाइम 1। सो लीनियर कन्वोल्यूशन का अभी लेंथ क्या मिलेगा आपको? 3 टाइम 1। दिस इज अ 4। इसका साइज कितना है? लेंथ कितना है? x ऑफ n का 4। h ऑफ n का कितना है? +3। 4 + 3 - 1, सो कितना होगा? 6। ओके, सो यहाँ पे आपको कितने तक मिलने वाले हैं? y ऑफ 5 तक एलिमेंट मिलने चाहिए। कितने? y ऑफ 0 से लेके y ऑफ 5 तक, मीन्स टोटल 6 एलिमेंट। ओके, सो मल्टीप्लाई करोगे, सब जगह क्या होने वाला है? 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो सब कॉलम को, क्या होगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सब जगह, है ना? 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो। सो दिस विल बी 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, देन डायगोनली इसे कट करो। सो y ऑफ 0 विल बी 1, y of 1 will be 3, 1 plus 2। okay, then y of 2 will be 5 plus 1 6, then y of 3 will be 5 plus 4 9, then y of 4 will be 3 plus 4 7, and y of 5 will be 4। okay, so this is what? Linear convolution। okay, now for circular convolution,
सर्कुलर कन्वोल्यूशन, अगर ऐसा इस तरह का क्वेश्चन आता है, सी मैंने ये बताया कि ऑब्टेन द सेम रिजल्ट यूजिंग सर्कुलर कन्वोल्यूशन, इसमें और क्या ऐड है? मैंने क्वेश्चन पूरा कंप्लीट बताया क्या आप लोगों को? x1 ऑफ n बताया, x2 ऑफ n, देन ऑब्टेन द सेम रिजल्ट यूजिंग सर्कुलर कन्वोल्यूशन, ये क्वेश्चन में ऐड करना है। ओके, फाइंड द लीनियर, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, फाइंड द लीनियर कन्वोल्यूशन ऑफ x1 ऑफ n and x2 of n if x1 of n is in curly bracket 1 comma 2 comma 3 comma 4 and x2 of n is in curly bracket 1 comma 1 comma 1. Okay, and obtain the same result using circular convolution. So linear convolution find out करना है, उसके बाद obtain the same result by using circular convolution. जो भी linear convolution का आपको आंसर मिल रहा है, अभी जो भी आंसर मिल रहा है, क्या मिल रहा है? y of n is equals to, in curly bracket you can write the answer, that is y of n is equals to, टोटल कितने एलिमेंट्स मिलेंगे? 6 एलिमेंट्स। ओके, सो y of n फर्स्ट एलिमेंट रहेगा 1 कॉमा, देन सेकंड एलिमेंट विल बी 3, ओके, देन द नेक्स्ट एलिमेंट 3 plus 3 6, ओके, देन द नेक्स्ट एलिमेंट 2 plus 3 plus 4 so 9, then the next one is 3 plus 4 7, then the last one is 4. So like this, total how many elements are there? 6 element, curly bracket, complete. Okay, so this is the result of the linear convolution. Circular convolution में क्या करना है? h of n की जो साइज है, जो लेंथ है, अभी वहाँ पे 3 एलिमेंट है और x of n में 4 एलिमेंट है, तो आपको दोनों की साइज सेम करना है बाय डूइंग द जीरो पैडिंग। सो किस में एलिमेंट कम है? h of n में, सो देयर यू नीड टू अटैच 1 0, सो एलिमेंट साइज विल बी द सेम। Okay, so how you can solve that? So h of n you can write, h of n क्या है? 3 times 0 1, sorry 3 times 1 1 and then 0. Okay, then the next 4 by 4 मैट्रिक्स होगा क्योंकि 4 साइज है। ओके, सो द नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा? 0, लास्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा नेक्स्ट कॉलम का, और बाकी बचे हुए तीनों 1 1 1 प्रीवियस कॉलम। ओके, समझ में आ रहा है? लास्ट एलिमेंट क्या है अभी? 1, सो उसके बाद प्रीवियस कॉलम लिखना है 1 0 1 1। ओके, देन द लास्ट कॉलम क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट 1, सॉरी ये 1 है, सॉरी, so this is 1 1, then 1 0 1, like this. Okay, then your x of n as it is रहेगा 1 2 3 4। ओके, सो ये आपको क्या देगा? सर्कुलर कन्वोल्यूशन का रिजल्ट देगा। ये खाली सर्कुलर कन्वोल्यूशन का रिजल्ट दे रहा है। ओके, जिसका साइज 4 रहेगा, लेंथ 4 रहेगा। अभी सेम रिजल्ट चाहिए मुझे सर्कुलर कन्वोल्यूशन यूज करके, तो क्या करना है आपको? साइज जो है लीनियर कन्वोल्यूशन की कितना एलिमेंट मिले हैं? 6 एलिमेंट। सो x ऑफ n पे 2 जीरो ऐड करने पड़ेंगे और h ऑफ n में 3 एलिमेंट्स हैं, उसे 6 करना है तो 3 जीरोज ऐड करना पड़ेगा। ओके, एंड सेम इन सेम मैनर यू हैव टू राइट योर h ऑफ n। सो यहाँ पे क्या होगा? अभी साइज उसका 6 by 6 का मैट्रिक्स बन जाएगा वो। ओके, सो यहाँ पे 3 जीरोज ऐड होंगे, 3 1 1 1 जो सीक्वेंस है, उसके बाद 3 जीरोज। ओके, x ऑफ 4 में भी 3 जीरोज ऐड होंगे। ओके, because your linear convolution is having 6 elements. Okay, so like this. So by doing this, now you can obtain the result of circular convolution. That is not the same. To get the same result, you need to do the zero padding. Okay, 0 0 add करने पड़ेंगे। कितने जीरो? 6 zeros add करने पड़ेंगे। Okay, is there any doubt in this question? Solve कर पाओगे या करके देना है? Yeah, sir, solving now. Solve हो जाएगा। Are you getting the same result? Please verify. By doing this, are you getting the same result or not? Yeah, sir, solving. Okay, so I will give one more question. You can solve at your home, and then
we will take a break. Means we will continue in the next lecture, or if you want, I can tell you the another method also, circular convolution using DFT and IDFT method. Okay, it is the same. It is nothing. For example, this is a sequence. Okay, so what do you need to do by using DFT and IDFT method? Obviously, अभी total factor matrix क्या था? 4 times 1. If you remember this matrix, DFT has, so W raised to power 0 first row first column बन जाएगा. Okay. Directly 4 times 1 first column is, then 1j 1j, second column is 1j 1j, third column is also 4 times 1. Middle terms here are the negatives, then one by one alternate are negative, then the last two are negative over here. Okay, so this is the Twiddle factor matrix. Just do the multiplication, element wise multiplication, and add that. Means take this row on this column, multiply and add, you will get the first element of the x of k, for the first row. Then for second row on this column, second element, then third row on this column, third and fourth. So you will get the x of k. In the same manner, you need to find out the h of k. Twiddle factor matrix, h of k लिखना है. Okay. Then y of k is nothing but the multiplication of these two. Element wise, obviously 4 elements है दोनों में भी. So element wise multiplication लेना है. Okay, so you will get the h of k. Means x of k जो मिला और h of k जो मिला, दोनों का multiplication, you will get the y of k. But the required answer is not y of k. It is the DFT of that. So required answer is what? Y of m.
और यू कैन राइट m also. So y of n मतलब n के फॉर्म में चाहिए आपको, DFT के फॉर्म में नहीं चाहिए. ओके, सो व्हाट यू नीड टू टेक, y ऑफ k जो मिलेगा उसका आपको इनवर्स IDFT लेना है. सो दैट्स व्हाई इट इज अ DFT एंड IDFT मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने DFT निकाला दोनों सीक्वेंस का, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, जो भी आंसर मिलेगा दोनों का एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करना है, 4 एलिमेंट मिलेंगे. अभी उसका IDFT निकालना है. IDFT के लिए फॉर्मूला क्या है, y ऑफ n टूडल फैक्टर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, है ना. सो जो टूडल फैक्टर मैट्रिक्स था उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट स्टार उसके ऊपर, ओके, स्टार k n यू कैन राइट इनटू y ऑफ k, यहाँ पे क्या रहेगा, इनटू y ऑफ k जो आपको प्रीवियसली मिला है उसमें 4 एलिमेंट्स हैं. ओके, सो अभी ये टोटल फैक्टर 4, ये 1/4 हो जाएगा, 4 पॉइंट DFT है, 1/4 हो जाएगा. देन ये टोटल फैक्टर मैट्रिक्स जो है इसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोला है मैंने, तो क्या है जो आपका टोटल फैक्टर मैट्रिक्स है उसमें j जहाँ पे भी है उसके साइन चेंज करना है. तो ये पहला j जो है इसे प्लस कर देना है, माइनस है तो ये प्लस है तो इसको माइनस कर देना है. 1 का एज इट इज़ रखना है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं. यहाँ पे ये j प्लस है तो इसको माइनस करना है, और लास्ट वाला माइनस है तो उसको प्लस कर देना है. ओके, और यहाँ पे y ऑफ k जो मिलेगा उसके साथ लिखना है 1/4. ये टोटल फैक्टर मैट्रिक्स जो मैंने चेंजेस बताया वो चेंजेस करके, मतलब j को j के साइन चेंज करके, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, j के साइन चेंज करके देन y ऑफ k लिखना है. y ऑफ k x ऑफ k और h ऑफ k का मल्टीप्लिकेशन है, सो वो लिखना है और ये इनवर्स सॉल्व करना है आपको. ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लेना है आपको. सो दैट विल बी y ऑफ n, दैट विल बी योर फाइनल आंसर. So this is how you can obtain the circular convolution by using DFT IDFT method. Is there any doubt? If you have any doubt, you can ask. Okay. So write down one question. Yeah. सर टाइम आप Write down one question. सर टाइम हो गया है सर. Start थोड़ा लेट किया था ना, so 1-2-3 मिनट है अपने पास अभी, है ना, बराबर ना. एक क्वेश्चन लिखने में 2 मिनट लगेगा. लेफ्ट राइट डाउन. Determine the response y of n of FIR filter. Determine the response y of n of FIR filter. Input x of n is 1, 2, 1. Sorry, 1, 2, 2, 1. 2 बार 2 है. 1, 2, 2, 1. And x2 of n, sorry, and h of n is 1, 2, 3. Use DFT and IDFT formula. Use DFT and IDFT formula. That means circular convolution find out करना है and DFT IDFT formula use करना है. Okay. So अभी इसमें दिक्कत क्या है, इसमें जो आपका h of n है, सॉरी, हाँ हेलो सर. सर हाँ. इसमें हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं नहीं लीनियर, क्योंकि वहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो फिर DFT IDFT यूज करने को बोला ना. यूज DFT एंड IDFT फॉर्मूला. यस सर. ओके, सो हाँ, DFT IDFT फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. ओके, सो हियर व्हाट यू कैन डू, h ऑफ k फाइंड आउट करने के लिए आपका जो h ऑफ n है, x of n is given, okay, and h of n, so there you need to add 1 0. सर्कुलर कन्वोल्यूशन है. लीनियर भी रिस्पांस आपको सेम लीनियर कन्वोल्यूशन में भी मिलेगा DFT IDFT यूज़ करके, क्योंकि इसने मेंशन नहीं किया कि सर्कुलर कन्वोल्यूशन फाइंड आउट करो. ओके, सो अगर आप 0 नहीं ऐड करोगे उसमें h ऑफ n में एक 0 नहीं ऐड करोगे, सो आप DFT IDFT जो फाइंड आउट करोगे 0 तभी भी आपको ऐड ही करना पड़ेगा. ओके, बिकॉज मैट्रिक्स मेथड 4/4, so 4 input sequence लगेंगे. So you can find out the circular convolution by using DFT IDFT method over here. Okay, same sequence नहीं है, so linear वाला आपको tabular method या फिर graphical method वगैरह यूज़ करना पड़ेगा फाइंड आउट करने. ओके, सो सर्कुलर कन्वोल्यूशन DFT IDFT. h of n जो है उसमें एक 0 ऐड करना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें.
ठीक है, सो क्या करोगे, सबसे पहले एक्स ऑफ के फाइंड आउट करोगे, देन एच ऑफ के फाइंड आउट करोगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन लोगे, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आई डी एफ टी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, y ऑफ k बन जाएगा, और y ऑफ k का आई डी एफ टी लोगे तो क्या बन जाएगा, y ऑफ n मिलेगा. ओके, सो इज देयर एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, otherwise I can conclude. Let me take the attendance. How many students are there? Let me check. 33. Strength बहुत ही कम है. And this subject will be difficult. और any your कौन सा random signal analysis है ना आप लोगों को, RSA है, then DCOM I think prepare कर सकते हो, DCOM के लिए issue नहीं है, but RSA and this one DTSP, और कौन सा subject है आप लोगों की?